Good evening, everyone. Welcome to StudyIQ, and this is the 11th session of Geography MCQ, which is based on Odisha geography. So today's session ta jota apan mankar rahibo, we will have more than 20 questions of Odisha geography, and that is also that will be helpful for all of you. So ajiro jo rahibo eta बहुत important rahibo, jota ki amaro jemti tamaro minerals heigala, jeta rivers heigala, right? तो आपको आम पूरा टिके डिटेल्स रे देखि जबा हमरो जते रहिछि मिनरल्स जते हम कहबा राइट बाकी टिके शेयर कर दे त माने समस्त को जो ग्रुप्स रहिछि फाइन सो वंस अगेन एंड वेलकम टू स्टडी के प्लेटफॉर्म्स तो आज हमें ओडिशा एमसीक्यू जति की क्वेश्चंस रहिछि ताको डिस्कस करिवा एंड साइड बाय हमें कोन करिवा जो वैल्यू एडिशन पार्ट रहिछि त मानकर वी विल आल्सो डू द वैल्यू एडिशंस तो मु साइड रे जेतला वैल्यू एडिशन पार्ट गुडा कहबे ना त माने सेतरो कोन करियो यू कैन हैव that what you can add to that those value addition part I do add usually during the classes. Tale me wait kariba nahi, straight forward I will comes to the MCQ session. Write the fast questions. Salai start. Good evening everyone. Sanu, Sujata, Samir, Das Lucky is there, Satru, Sasmita. Salai. Chalo. Okay, now comes to the fast questions. So first question, we will have some questions from the physicals and the geomorphology of Odisha. And the first question is that with regarding the eastern Ghat of Odisha and Odisha, that is characterized by what? The eastern Ghat in Odisha are characterized by what? Good evening, Muduli. Abhishek as well. Good evening. Very good. Now comes to the first one. As usual, this Raven clears, right? Chalo, fast one, fast questions is be for you. So first option jodi dekhiyo, that is discontinuous hills ranges running parallel to the coast, composed largely of ancient metamorphic rocks, presence of highest peak of Odisha. Let's have go through the option fast. समस्ते ऑप्शन को देखियो आराम से करियो बिकॉज या द्वारा आम कौन कर ओडिशा जियोग्राफी टाको रिवीजन मध्य मु करई देबी ताले देखियो फर्स्ट ऑप्शन कोन ठीक अछि कि भूल अछि हमें देखियो एंड जदियो भूल अछि बा ठीक अछि कोन पे ता रीजन मध्य हमें देखिबा द आंसर जति मु कहबी शत्रु इज कमिंग विथ डी एवरीबॉडी इज गुड इवनिंग लक्ष्मी राइट द डी एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द डी देवमली त हम जानचे तो डी इज द करेक्ट आंसर जति हम देखिबा डी इज द करेक्ट आंसर नाउ काहे की ना एबे जति मु क्वेश्चन पचर इफ डी दिस वन इज करेक्ट तो इस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट देन व्हाई देखो ओडिशा जति हम कहबा दिस इज लाउ द ईस्टर्न घाट्स इन ओडिशा इज लाइक दिस बट दैट इज डाइसेक्टेड बाय रिवर जमती तमरो लेट से ब्राह्मणी हेगला बैतरणी हेगला महानदी हेगला ऋषिकुल्या हेगला तो ये जो रिवर गुडा ना ये माने कोन करछन्ते डाइसेक्ट करछन्ते दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट लिखाइ छै ना डिसकंटीन्यूअस बट मु जदी तुमको एठी गोटे क्वेश्चन जदी आको चेंज कर देबी ऑप्शन जदी मु कहि देबी चेंज कर देबी ऑप्शन को जदी मु टिके चेंज कर देबी मते को व्हिच पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इन ओडिशा इज लार्जली डिसकंटीन्यूअस केही जने मते को मु ऑप्शन तुमको देबी मु कहली व्हिच पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इन ओडिशा इज लार्जली डिसकंटीन्यूअस whether between Mahanadi and Godavari. Option 1 between, that is I would say Mahanadi and Godavari. Option 2 Mudali Mahanadi and रहिबा तमरो सुबन रेखा
कुह कोटा व्हिच पार्ट जदि ए स्टेटमेंट जदि समस्त को जाना अछि समस्ते ठीक कहउछ तले एटा भी कहि परिबो विथ क्लैरिटी देन गो फॉर तो आर आंसर कोन हो सेटा डायरेक्ट नो डाइसेक्टेड दैट वाज डाइसेक्ट that is dissect by the reverse. So now मु देखिबे एबे केते जण ऑप्शन ठीक करूछो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ताले एटा होची तमर ऑप्शन 2 इज करेक्ट राइट ताले एबे देखिबा देखो मु ए क्वेश्चन एथि पई मु एटा पछाली ताले जदी जणे एटा कहूची ठीक ए आंसर टाको ठीक कहि पारुची ताले तार त क्लैरिटी थिबो हां कि नहीं क्लैरिटी थिबो दैट इज व्हाई मु आस्क्ड मु पछाली तो दैट मीन्स ताले कोटा ठीक हबो दिस इज रॉन्ग दिस वन इज रॉन्ग दिस वन इज करेक्ट सो करेक्ट कोना करेक्ट होची तमरो महानदी एंड गोदावरी दिस वन इज करेक्ट दैट इज व्हाट महानदी एंड गोदावरी तो राइट आंसर किए देची दैट मीन्स महानदी गोदावरी देची सुजाता प्रधान आउ देची विश्वजीत गिरी ए दी जण जदि हम देखबा ठीक आंसर देची बाकी समस्त रॉन्ग आंसर काहे की बिकॉज महानदी जदि देखबो महानदी ब्राह्मणी बैतरणी एपटे अधिक रिवर ना महानदी और गोदावरी भितर इंपोर्टेंट रिवर होची केवल तमर किए ऋषिकुल्या बट ऋषिकुल्या डाइसेक्ट करूनी ना ऋषिकुल्या इज नॉट डाइसेक्टिंग दैट इज व्हाई मु पचल तो हियर इट इज लाइक कंटीन्यूअस बट एई जगह जदि तमे देखिबो डिसकंटीन्यूअस तो एई पार्ट रे हम देखिबा दिस इज लार्जली कंटीन्यूअस सेथि पई तो तुमको ए रीजन रे तुमको देवमाली देखा जाउची ए रीजन रे तुमको कोन महेंद्रगिरी देखाउची नल तो महेंद्रगिरी एई पटे देखा जाई थांता बिकॉज़ ए पटे जेहेतु लार्जली कंटीन्यूअस अछि दैट इज व्हाई हाई पिक सब ए पटे ही देखा जाए बिकॉज़ नंबर ऑफ रिवर्स दो रिवर्स अछि बट दे आर नॉट क्रॉसिंग द ईस्टर्न घाट राइट एबे बुझी पारिबो तो आई नीड क्लैरिटी एबे मु विथ क्लैरिटी रे सह तुम मन को कहतली नाउ जदी तमे कहछो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट देन व्हाई काहे कि मते को काहे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट एनीवन के देखिबो आरो जदी कहि देबो मु तल जानिबि कि हां समस्त मु जानि छी मो पिला माने एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विथ कांसेप्ट एंड क्लैरिटी whether you need the concept and clarity or you are having the concept clarity जदी अछि मु तो बिलीव करियो कि concept and clarity everybody is having otherwise केमदी कहलो कि D is the correct answer D is correct answer no doubt this is the D is correct answer but मु गोटे गोटे ऑप्शन को चेक करियो त माने को रेट रे केते डेप्थ रे जानि छ हां एबे मते को ये काहे की जदि तुम माने कहलो कि सर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हां मु भी कहूची दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट आंसर इज डी देन व्हाई मो क्वेश्चन होची व्हाई काहे की आर आंसर जे दब हम पक्का चॉकलेट देबी हां को फटाफट फटाफट आंसर दियो एबे आज चेक कराबो तुम मन को वेरिफिकेशन कराबो हला वेरीफाई करिबी कि वेदर तमने एमती मते माने ये एमती ए मारुछो ना जानिछो हम्म हम्म चलो 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 आसो देखिबा देखिबा काहे की करेक्ट सस्मिता कोच एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड शुभकांत कोच ठीक आंसर की कोच शुभकांत कोच सर मेटामॉर्फिक रॉक्स खंडोलाइट गेनिस फाउंड ताले आंसर होची खंडोलाइट आंसर होची कोन रहइबो खंडोलाइट रॉक दैट इज व्हाट खंडोलाइट रॉक सो दैट इज द आंसर बिकॉज ऑफ खंडोलाइट रॉक ता व्यतीत आउ जदी कहबा जोटा सस्मिता कहूची के ट्रांसफॉर्मेशन देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो एटा यूनिवर्सल आंसर ही गला ना जोटा सस्मिता कहूचो के एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखो ये एमिति आंसर तमे देइचो दैट मींस मु जोटा पढ़ी पारुची दैट इज यूनिवर्सल आंसर दैट डज नॉट हैव एनी मतलब क्लियर कट आंसर नहीं से थरे राइट बुझ बच्चा असुविधा कोन होची दैट डज नॉट हैव एनी क्लियर कट आंसर
तो क्लियर कट आंसर मते दरकार ना तो क्लियर कट आंसर इज ओडिसा रे दीटा गेन कोन अछि तमरो क्रेटन अछि गोटे होछि हमर सिंहभूम क्रेटन आ गोटे होछि हमर कोन बस्तर क्रेटन तो ए मझिरे महानदी जाउछि ताले ए जो दीटा क्रेटन रहिछि हमर तो ए क्रेटन गुडा मेटामॉर्फाइज्ड हो जाइछि एंड दैट इज द आंसर that the cretans or आमे कहबा they got metamorphized चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ छाड़ा आउ देखिबेनी आसबे क्वेश्चन नंबर 2 कमलाकांत भी बहुत बढ़िया आंसर दैछो चलो गुड इवनिंग शिखा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आंसर जदि देखबा ए समस्ते ए चलची गुड इवनिंग आयशा समस्ते ए दउछ त आंसर सुभद्रा कोची 2 everybody is gone so yes answer would be 2 is correct answer now ध्यान से देखना क्वेश्चंस को से कोची वेस्टर्न ओडिसा रे देखा जाए संबलपुर बलांगीर आउ कोठी अनुगुल रे देखा जाए ये कथा ओपीएससी पचारि कि ब्लैक सॉइल कोठी देखा जाए सो दैट इज एलुवियल डिपोजिशन बाय द महानदी तो एटा पैचेस रे देखा जाए दिस इज व्हाट पैचेस दिस इज नॉट कंटीन्यूअस दिस इज इन पैचेस दिस वन इज व्हाट पैचेस रे देखा जाए दिस वन इज नॉट कंटीन्यूअस ना रहिला कथा तो आमर साधारणतः तुमको ये अनुगुल रे देखा जबो ये जदि तमे जमने अनुगुल को जाइथिबो अनुगुल रे देखबो ब्लैक सॉइल देखा जाए ओपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन रे पचारछि एंड दैट इज एलुवियल डिपोजिट एबे कोन होछि ना काना सेथरे हमें कहबा कोल्स रहउछि सेथरे ब्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट रहउछि बट देयर इज नो ओडिसा रे साधारणतः जोटा तम माने कहउछो तुमको बहुत कलाहांडी जोटा बलांगीर सोनपुर एथरे देखा जबो संगीता गुड इवनिंग स्पंदन गुड इवनिंग राइट तो एटा कोन रहबो दैट इज डिपोजिटेड बाय महानदी देयर इज नो सच आमे कहबा जो तम माने जानिचो एठा देखो मेजॉरिटी आंसर काहे कहिचो मु जानिछि आंसर तम माने एथि पे कहजे बिकॉज़ आमे जानिछे कि बेसाल्ट जोटा फिजर टाइप ऑफ बेसाल्टिक रॉक जोटा थिला हमर कोठी डेक्कन प्लेटू रे तो से डेक्कन प्लेटू रे वेदरिंग इरोजन हवा द्वारा ब्लैक सोल हिची एटा तो समस्त जानिचंती एंड दैट इज व्हाई तम माने कहिचो मु बुझी परछि बट दैट फिजर टाइप ऑफ वोल्केनिक एरप्शन डिडंट टेक प्लेस हियर डिड इट नो so that is why answer would be there तो याकू से पचारछि एटा काहे की हुए now drainage and climate सु आसीबा this one is easy one okay एठी बो soil रो आउट के क्वेश्चन पचार दे एठु टिके गोटे दिटा soil रो क्वेश्चन पचार जेहेतु एटा soil ऊपर अछि मते को ओडिसा रे सबटु अधिक येलो soil कोठी देखा जाय रेड येलो soil सबटु अधिक कोठी देखा जाय ओडिसा रे सबटु अधिक रेड येलो soil कोठी देखा जाय साउंड लेस आसुसी नाउ एबे ठीक अछि साउंड कोरापुट रीजन के कहलानी एबे साउंड ठीक अछि हाँ स्पंदन राइट नो नो जदि तुमको कहीं भी पचारे ओडिसा रे सॉइल जदि तुमको रेड येलो पचारिबो देखो ओडिसा मैप मोर एते
साधारणतः वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप I can do better in way, but I will try to have make a good one. I will try what I said. I will try. Let's say this one is Odisha map, right? Now this portion of Odisha is having red yellow soil. That means Sundargarh, particularly Sundargarh. Red soil जदि मु draw करिबी, the largest soil of India Odisha is what? Red soil. The largest soil होची तमरो red soil. Black soil जदि तमे देखिबो, this portion is your black soil. This portion is your Balangir, Baud, Sambalpur, Anugul. This region is having black soil, right? Now this region is your एठी हमको देखा जिवो कोन लैटराइट सॉइल एठी किछि किछि जगह रे लैटराइट सॉइल भी देखा जिवो जेमति केउझर ए लैटराइट सॉइल मध्ये किछि किछि देखा जे डॉट डॉट दउची लैटराइट सॉइल ए जो मु डॉट डॉट दउची दिस इज लैटराइट सॉइल एटा होची रेड सॉइल ओडिसा रो लार्जेस्ट सॉइल किए रेड सॉइल सिंपल मन रखो जोठी ईस्टर्न घाट जाईची जो बटे वाला हाईलैंड्स ये सब तुमरो रेड सॉइल सबठु लार्जेस्ट सॉइल आउ कोठी देखा जो तुमको एठी मध्ये टिके येलो सॉइल्स देखा जो ए जो हमरो एटा कोन रही गंजाम ये सब रीजन रे तुमको देखा जिवो एंड द कोस्टल रीजन रे तुमको कोन देखा जो सालाइन सॉइल देखा जो एठी कोन सालाइन सॉइल देखा जिवो बाकी जोटा रहला तुमरो अलुवियल सॉइल दिस रीजन इज व्हाट अलुवियल सॉइल देखा जिवो तो दिस इज हाउ द सॉइल्स ऑफ ओडिशा मैप्स जदि हम ड्रॉ करिवे लार्जली आई वुड से ओके हे जो एबे तो लार्जेस्ट ये सॉइल ओडिशा मैप गोटे मुझे तुमको ड्रॉ कर देखई देली अच्छा तो सॉइल तुम हो अलुवियल सॉइल्स ये सब देखी तो लैटराइट सॉइल कोठी देखा जाइए आगु तुम मैंने टिके देखीदेव गोटे सॉइल रो क्वेश्चन आसिला माने हमको सब सॉइल पढ़ी जीवार अच्छी एमती ना कि नेक्स्ट सॉइल सेम क्वेश्चन विल बी द ब्लैक सॉइल विल बी अगेन रिपीटेड नो दैट मीन्स एथरू तुमको कहगला कि यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल्स ऑफ ओडिशा इन डिटेल दैट्स वे यू हैव टू प्रिपेयर सिंपल गोटे रिवर क्वेश्चन आसला माने सब रिवर पढ़ी जीव एमती ना कि 10टा मु क्वेश्चन बनैबी रिवर राइट अरे भाई गोटे क्वेश्चन बनई 10टा क्वेश्चन बनैबा सहित समान नुह कि मु गोटे महानदीर बनैबी महानदीर 10टा क्वेश्चन बनैबी कहीं मुझे डिस्कस करदे हो कि महानदी कौन चलो फिर स्टार्ट करो चलो रिवर्स इजी क्वेश्चन अच्छी देख सस्मिता ये लक्ष्मी ये मुदली ये सनु प्रसाद 1 and 3 दैट मीन्स ए भाई ये लिखाई थी तो ये आंसर दिया ना सुश्री संगीता इज ए स्पंदन इज सिंह ए ओंग जोंग लेखा नहीं तुम कह ओंग जोंग एंग जोंग ऑप्शन रे अछि कि ऑप्शन रे अछि ओंग जोंग ताले महानदीर ट्रिब्यूटरी किए महानदीर ट्रिब्यूटरी होची शिवनाथ किए किए शिवनाथ हासदेव ठीक है शिवनाथ हासदेव तापरे ओंग जोंग चेल सेपटे जीवो तापरे बाघमती हाथी ओंग जोंग तमर आसबो तेल शिवनाथ सब लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट किए शिवनाथ महानदीर ध्यान से मन रखो महानदीर लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होची शिवनाथ कौन SHEONATH शिवनाथ देन सेकंड किए त्यापर आसबो तमर तेल सेकंड आसबो तेल सेकंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट होची तेल शिवनाथ हासदेव बाघमती हाथी ओंग जोंग तेल दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी हाँ कि नहीं ये सब हो ईप अच्छी ईप मांट भूली जाइए सॉरी सॉरी ईप एंड मांट सॉरी सॉरी आउ गोटे अच्छी ईप एंड मांट किए किए अच्छी ताले महानदीर जदि मु आउ ऐड करी ईप एंड मांट सेटा तुम जो से दया देवी फे भी ऐड करन से गोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज ईफ आउ गोटे किए अच्छी तुम ईफ मांट ये सब राइट बैंक सॉरी लेफ्ट बैंक
ए सब कौन शिवनाथ हासदेव ए सब तुम आसो लेफ्ट बैंक, राइट बैंक रे आसो ओंग जोंग तेल। चलो अच्छा ये तो आम देखीगले। चलो ये तो हो गला महानदीर ना महानदीर डिफरेंट क्वेश्चन हो पारे महानदी उपरे केतेटा रामसर साइट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन महानदी उपरे केतेटा रामसर साइट अछि पूरा महानदी को डिस्कस कर देबा में जोड़ा देवी दया लिखित स्पंदन सेटा आसीबो नाही। देवी एंड दया दे आर डिस्ट्रीब्यूटरीज दे आर नॉट ट्रिब्यूटरीज। अभिषेक सिंह एबे आवाज आसुची स्पंदन ठीक ठाक करेक्ट माइक इज फाइन टू मी मतलब टू यू। कौन पचाली मु महानदी उपरे चारिटा अछि रामसर साइट की कहूची तीनटा ना हीराकुद अंशुपा सातकोशिया तीनटा अछि केतेटा तीनटा अछि ताले फास्ट आसीबो हीराकुद तापर सातकोशिया तापर अंशुपा ए तीनटा तीन प्रकार एटा होची मैन मेड एटा होची नेचुरल एटा होची नेचुरल तो दीटा तमरो नेचुरल गोटे होची मैन मेड हीराकुद ए तीनटा जाको कोन। अच्छा महानदी एंटीसीडेंट ना एंटीसीडेंट नुह कौन महानदी इज एंटीसीडेंट और ध्यान से सुनिबो ना महानदी इज ए मो ऑप्शन दउछि हैला महानदी इज ए सेक्वेंट महानदी इज इनसेक्वेंट कौन महानदी इज ए सेक्वेंट स्ट्रीम और इनसेक्वेंट स्ट्रीम कौन हमु देइनी ए दीटा रूप ए दीटा यू हैव टू पिक फ्रॉम हियर। एंटीसीडेंट लेखा ही है ऑप्शन रे तो एंटीसीडेंट कहले कोन हबो मु कोन करबी। हां हां स्पंदन शत्रु सस्मिता डिड आई राइट देयर no then you have to pick whether it is a sequent stream or insequent stream. Don't go for antecedent right antecedent last time OPSC पचार थला तो OPSC last time antecedent जदी पचार छै next time एटा ही तो पचारिबो ना कि sequent कि insequent से पुनी काहे कि antecedent पचारिबो से तो जानि छि पिला एटा तो मु आंसर देइथिल पिला जानि छंती। आंसर कौन सेक्वेंट आंसर कौन सेक्वेंट है ना कौन कौच आंसर सेक्वेंट तो आंसर कौन इनसेक्वेंट सेक्वेंट नुह इनसेक्वेंट आंसर होची इनसेक्वेंट। इनसेक्वेंट दी भागर भाग होची गोटे होची एंटीसीडेंट आ गोटे होची सुपर इम्पोज्ड दैट इज व्हाई एंटीसीडेंट का भीतर आसुची इनसेक्वेंट रो गोटे पार्ट एबे बुझी परछो कि नहीं सो दैट मींस नेक्स्ट टाइम जदी तुमको से पचारि पारे कि महानदीटा सेक्वेंट रिवर ना इनसेक्वेंट रिवर तो काना से एटा तो ऑलरेडी पचारिची नेक्स्ट टाइम इधर सुपर इम्पोज्ड पचारिबो नॉले इनसेक्वेंट पचारिबो नॉले सेक्वेंट पचारिबो। गेटिंग माय पॉइंट it's not sequent it's insequent it's a what insequent sequent अर्थात कोन sequent रो मीनिंग होची द रिवर दैट फ्लोज फॉलो द स्लोप रिवर दैट फॉलो द स्लोप जेमिति कि नै जाओ ये गोटे एटा गोटे हैला स्लोप एटा होची भाबो ईस्टर्न घाट राइट एटा एठू कोनोसी गोटे रिवर ओरिजिन हैला तो से एमती जीवो एटा कोन को स्लोप को फॉलो करूची बट एमिति गोटे रिवर थाई परे एठू ओरिजिन हो एपटू को जीवो तले स्लोप को फॉलो करूची कि ना दिस इज नॉट फॉलोइंग द स्लोप। महानदी एमिति महानदी एठी छत्तीसगढ़ रो ओरिजिन हैला ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके आसिला किंतु तमरा ऋषिकुल्या कथा नै जाओ तमे साळंदी कथा नै जाओ तमे बुढ़ाबाळंग कथा नै जाओ तमे छोट छोट जेते हम रिवर अछि लेट्स से हमें वंशधारा कथा नै जाओ ये सब कोन सेक्वेंट से माने होचंती दे आर फॉलोइंग द स्लोप दे आर नॉट अगेंस्ट द स्लोप जेमिति राइट आकु मु बेसी बुझेबि नै हैला
बुझिपारछ ए खत्म एबे मते कुह आंक भितरे मु एठी तुमको ऑप्शन देली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्टर स्ट्रीम मु एठू गोटे आउ गोटे मु चेक करूची देखो साधारणतः एते टाइम हुएनि के डेप्थ को जीवा पई मु कहली एग्जाम आसलान टिके चेक कर दवा तम माननकू एठी आउ गोटे मु ऑप्शन देली के तम माने कांसेप्ट क्लैरिटी अछि कि नै आज टिके चेक करिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ ओडिशा एटा को मु काटी देली हैला इज ए मास्टर स्ट्रीम कुह आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए मास्टर स्ट्रीम एथरो मते पिक करियर अछि पिक इट ये पांचटारू कहून याकू कहीं देखुच एटा दरकार नहीं ये पांचटारू कोटा गोटे चूज करी कहून ये पांचटारू चूज करी कह कौन है आंसर महानदी कौन महानदी चलो बहुत हो गला हे जीवो आंसर महानदी मास्टर स्ट्रीम मैंने मेन स्ट्रीम मास्टर स्ट्रीम मीन्स कौन व्हेन आई से मास्टर स्ट्रीम दैट मीन्स द मेन स्ट्रीम राइट दिस वन इजी पिक पुणी मु पचारि जे ओडिशा रे कोठो अधिक रेनफॉल हुए तुम ये भावन कि एते इजी क्वेश्चन हेले कोन मु क्वेश्चन चेंज करिवि क्वेश्चन चेंज करिवि ना चलो फिर मेरा आंसर देई सर ओडिशा रिसीव्स रेनफॉल सिंस विंटर mainly due to what okay ताले मते को ओडिशा रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल को थ्रू मैक्सिमम रेनफॉल ए चारटा को थ्रू ओडिशा रिसीव करे मैक्सिमम रेनफॉल ओडिशा रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम वेयर को मते ए चारटा रु को थ्रू ओडिशा सबटु हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करे अगेन सी तो भाई साउथ वेस्ट तो हमारे एटा तो मॉनसून हबो ना अच्छा एटे मॉनसून नहीं कि रिट्रीटिंग मॉनसून हबनी हाँ ताले पुणी सेटा हबो आंसर अगेन आंसर सेटा हबो जदि मु एठी लिखि थांती साउथ वेस्ट मॉनसून देन आंसर कुड हैव बीन दैट वन आंसर कुड हैव बीन दैट वन चलो soil vegetation ए थ्रू देखो द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा इज प्राइमरली फाउंड इन व्हिच रिवर डेल्टा कहीं की पचारि मु राजा इज सेइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत बढ़िया चलो
Abhishek Raj and Raja also there. भाई सब डरा दोगे तुम. The mangrove forest of Odisha primarily found in which river delta? Whether it's Subarnarekha, Brahmani, Baitpurani, Bangsara, Rusikulya, which one? चलो 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 फटाफट फटाफट. Next. B जाउची सोनाली सोरेन B. Spandan, everybody is going for the B, right one. Okay. ताले मते को ओडिसार मैंग्रोव रे रैंक केते? ओडिसार मैंग्रोव एरिया बढ़ी ना कमी अकॉर्डिंग टू द लास्ट द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया. ओडिसार मैंग्रोव एरिया द लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार बढ़ी ना कमी कौन है? लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार द मैंग्रोव एरिया ऑफ ओडिशा इज इंक्रीज्ड. अच्छा मते को इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा लास्ट फॉरेस्ट सर्वे कोची द that is the mangrove has increased, that means the केंद्रापड़ा, that is what केंद्रापड़ा. तो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट्स रे जदि हम देखिबा सबटो हाईएस्ट मैंग्रोव जदि हम देखिबा दैट मीन्स हम केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट्स रे अछि एंड जोटा तमरो ब्राह्मणी बैतरणी रहिछि. तो एठी रे हम कहिबा कि ओडिसा रे जो मैंग्रोव ता बढ़िछि एंड फास्ट होछि तमरो किए वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, then it will your Maharashtra, MHR, then Odisha, then Andhra Pradesh, like this. ये तमे आकु देखि देबो डेटा टा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स देखि देबो हैला. ओके चलो फिर बाकी मैंग्रोव काहे की वे जानछो? मैंग्रोव को कोन कहवा जे? बायोसिल्ट. मैंग्रोव को कोन कहवा जे? बायोसिल्ट. ध्यान से मन रखो. मैंग्रोव को कोन कहवा जे? बायोसिल्ट. मैंग्रोव को आउ कोन कहवा जे? इकोटोन. मैंग्रोव को आउ कोन कहवा जे? बफर जोन. मैंग्रोव को आउ कोन कहवा जे? द डिफरेंट नेम इज देयर, राइट. चलो फिर भितरकनिका नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, समझते जानिछे भितरकनिका नेशनल पार्क काहे की? व्हाई? It's a biosilt. It's a what? Biosilt. The Vitarkanika National Park is famous for which unique ecological feature? Sixth number. India's largest population of the estuarines crocodile, highest population of wild buffalo in the eastern India, dry deciduous teak mountain, that is the what plantation happens there, world's largest rookery of olive ridley turtles. And Sonali Soren coach ये बाकी समझते देखिबा. Sujata is going for the A. Sikha is going for A. It's an easy one. This one is what? Crocodile. This would be answer would be what? Crocodile. हाँ जदि मु भितरकनिका न कहि कि कहितांते this is गहिरमथा, right? If I were had I gone for that गहिरमथा, or if I were mentioned that गहिरमथा, that means the answer would have been the olive ridley, that is what rookery. गहिरमथाटा होची तमरो वर्ल्ड लार्जेस्ट जैसे से भितरकनिकार ईस्टर्न साइड रही. एठी तुमको तीन प्रकार क्रोकोडाइल्स देखा जाए, मगर देखा जीवो, घरियाल्स देखा जीवो, सॉल्ट देखा जीवो, देन पॉपुलेशन ये आमी देखे जाए. बट दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एठी कोन देखा जाए? एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जाए. करेक्ट हे जीवो समझते एज एज एटा कर परबो. देन economic geography में आसीबा. Which of the following districts has the largest concentration of the chromite reserve of Odisha and in India as well? And Sonita also joining me. हाँ चलो फिर ट्राई करो हबो राइट.
7 ये चलती समझते हैं गुड्डू समझते ये रश्मि लिंकू शिखा बहुत बढ़िया आसिफ everybody is going for A. Yes, the right answer is A. How much? Then how much the total percentage of chromite found in Odisha? It's almost 96%. Almost what? 96%. That means in terms of the minerals, if you go for the minerals, we are having national average of 60% of the bauxite, 98% of chromite, and 28% of iron ore and 26% of coal. That means Odisha is having 26% of coal, 28% of iron, 96 to 98% of chromite, and so that is why Odisha is also called as one of the largest mineral state of India, next after Jharkhand. Next after your Jharkhand, right? Chalo fir. And this chromite is a what form of iron? It's a form of iron. Sukinda Valley, and the which region is very famous for that? Sukinda Valley. Sethipai to tamar achi Kalinganagar steel plant. SEZ, special economic zone, is there. Kalinganagar steel plant, that is the special economic zones out there, right? That is why. That means Kalahandi, you will have what? You will have what? Bauxite, this region. Balangir, there is no, Balangir is not there, but Kalahandi you will have bauxite. Koraput you will have bauxite. Jajpur you will have chromite. Sethipai to match kariya pai dei pare. Keonjhar you will have iron ore. Sundargarh you will have limestone. Your Mayurbhanj you will have iron ore, right? Chalo fir. The Raulkela steel plant is one of the earliest public sector steel plant, was established with collaboration of which state? That is the USA, USSR, Germany, and UK. Raulkela steel plant is one of the growth पोल आम कहवा. इट्स नॉट ए ग्रोथ सेंटर, इट्स ए ग्रोथ पोल. जदि तुमको पचार एमती क्वेश्चन पचारे कि राउरकेला स्टील प्लांट इज ए ग्रोथ पोल और नॉट, यस तुम कह इट्स ए ग्रोथ पोल. इट्स ए ग्रोथ पोल. इट्स ए व्हाट? ग्रोथ पोल. कौन कह? इट्स ए ग्रोथ पोल. इट्स ए व्हाट? ग्रोथ पोल. सी जर्मनी. इट्स द राइट आंसर इज सी जर्मनी. देन व्हाई सेटा को आम कहीं पिक कले? राउरकेला को ही आम कहीं पिक कले कि स्टील प्लांट पाई कौन दरकार? ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, लाइमस्टोन, कोल, वाटर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, मार्केट, ये सब दरकार. एंड ये सब जेहेतु मतलब आम कह राउरकेला रे वाटर अच्छी, ब्राह्मणी वाटर मिलगला, कोल अच्छी, तुमर लाइमस्टोन मिलगला, आयरन ओर अच्छी केउझर, तो सेटा गोटे आम कौन था फिजिबल. प्लस ये पाखे अच्छी किए झारखंड अच्छी, सेठू रानीगंज वगैरह से तो बेंगल फेंगल झरिया फेरिया अच्छी, सेठू आनीपर से फिक्स कर. इट्स ए ग्रोथ पोल. इट्स ए ग्रोथ पोल. कौन कह? इट्स ए ग्रोथ पोल. चलो एंड दिस इज ना बर्तमान एटा सेल. एटा कौन? सेल रो आसुची. इट्स ए सेल. ना द दैट मीन्स डेमोग्राफी एंड कल्चर. द डेमोग्राफी एंड कल्चर जदि हम देखिबा लास्ट ऑप्शन तुम देखि परिबो. एक मिनट. हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ओडिशा सेक्स रेशियो इज कौन? से सेक्स रेशियो देखिए कि सेक्स रेशियो इज एवं द नेशनल एवरेज. द सेक्स रेशियो इज हायर देन द नेशनल एवरेज. अच्छा, एटा लिटरेसी देखिए. देन ओडिशा हैज अ लोअर that is population of ST than the national average. Odisha has the lowest decadal growth of among the eastern state. चलो ट्राई करो दिस वन. Odisha literacy rate is below though, that means national average हमें जानी चाहिए. and answer 2 is the correct, B is the correct. लो ना आमर तो शेड्यूल, ये तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आमर शेड्यूल ट्राइब्स अधिक आमर केते लगभग 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. दैट मीन्स 80 जदि मु कहबी ना कि वी आर हैविंग नेशनल एवरेज केते. इफ यू गो टू द नेशनल एवरेज, द शेड्यूल ट्राइब्स जदि हमें नेशनल एवरेज जीवा, इट वुड बी 8.9% national average, but in Odisha it is 22%. in Odisha it is what? लगभग on an average. ओडिशा रे जदि हमें शेड्यूल ट्राइब्स देखिबा केते 22% ऑफ ओडिशा पॉपुलेशन. नेशनल एवरेज एटा रहबो तमरो नेशनल एवरेज, दिस वुड बी ओडिशा रे जदि हमें देखिबा. बट दिस वन एटा हमर कोन ओडिशा तो बिलो रहिछि,
तो दिस वन इज करेक्ट आंसर, दिस वन इज रॉन्ग। तो এটা তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল হবো, এটা ইস্টার্ন রে যদি আমি দেখব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিটা। নাও কামস টু দ্য লিঙ্গরাজ টেম্পল, ইজি কোয়েশ্চেন। Next one, the Lingaraj temple of Bhubaneswar represent which of the following architectures? बाकी एठी तमरा आंसर तो दिया ही देखि देबो कोन 10 नंबर हैला कोन नगर स्टाइल रेखा देवलो। इसे व्हाट नगर स्टाइल ओडिसा रे केते प्रकार टेंपल स्टाइल अछि? द रीजनल वेराइटी ऑफ जो ओडिसा रे टेंपल आर्किटेक्चर हम जो स्टाइल अछि केते प्रकार अछि ओडिसा रे? हां ओडिसा रे केते प्रकार अछि? जजाति 1 3 टाइप्स कोन? रेखा देवलो, खाकरा देवलो एंड कोन पीढ़ा देवलो, सेटा कहबो ना। क्वेश्चन नंबर 11 assertion देखो Odisha is called as the mineral hub of India. Reason, it has the largest deposit of bauxites and iron ore in the country. इलेवन ए जदि मु देखबी पिंकू, नाहक, शत्रुजीत, आसिफ, शिखा, शुभकांत, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए। ओके बहुत बढ़िया, राइट चलो फिर करेक्ट। बिकॉज हमें देखिए कि बॉक्साइट 28% ऑफ आयरन and 96% of your bauxite, and that is why minerals hub of India. And Odisha is the largest producer of iron and steel as well. Odisha is what? Largest producer of iron and steel. Odisha is the largest producer of iron ore. Odisha is the largest producer of iron and steel. Odisha is the largest producer of coal. Odisha is having the second largest reserve of coal. Odisha is having one of the largest iron deposit. How come darkar? Ethical answer solve hoijibo. But we don't have that much of limestone, right? We are having scarcity of limestone is the only except I would say certain part of Sundargarh, that Sundargarh region is having some sort of limestone which is required for the production of iron and steel. Now comes to the 12 number questions. Odisha is frequently faced the devastation of the cyclones, reason being its coastal region lies in the path of northeast trade wind. चलो आंसर देखो 12 एटा जी कहि दो मु चॉकलेट देबी पक्का को तो मैंने तो होशियार अच्छा वाह बहुत बढ़िया।
वाह बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट इट्स ए पार्ट ऑफ व्हाट एटा नॉर्थ ईस्ट नो इट्स ए साउथ ईस्ट नाउ इट्स ए साउथ ईस्ट इट्स ए व्हाट साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट अच्छा ताले एठी मते आंसर दे दियो आउ गोटे भी ताले क्वेश्चन पचार दे दी त माने एक कथा जानिच मतलब त माने होशियार हे गेलोनी नहीं हो ताले मते आउ गोटे आंसर दे दियो एठी ताले ओडिसा को काहे के अधिक साइक्लोन आसुची ऑप्शन 1 व्हाई डज many cyclone strike Odisha? Why does many cyclones strike Odisha? Option 1 Odisha is having longest coastal line in the east coast. Option 2 because of shape of the coast, because of shape of the coast. Option 3 because of deltaic region. Option 4 that means B C sorry it is C. D option D because of Bay of Bengal, because of Chilika mu kahi sorry because of Chilika. So option 1 Odisha is having longest eastern coastal, shape of the coast, deltaic region, Chilika. को सब फैक्टर जोगु कोटा भितर आंसर के व्हाई डज मेनी साइक्लोन स्ट्राइक ओडिशा मु ऑल ऑप्शन दे ही नहीं ऑल कोठी ऑप्शन दे छी ऑल कहउचो मु ऑल ऑप्शन रे दे ही नहीं तो ऑल को कहीं जाउचो मु बुझी परनी डिड आई so answer would be what deltaic region answer would be what this is because of deltaic region answer would be C so answer would be C answer would be C answer would be C आंसर कौन हम सी डेल्टाइक रीजन बिकज डेल्टा कौन ही थाए बिकज डेल्टाज आर लो प्रेशर डेल्टाज कौन ही थाए लो प्रेशर ही थाए डेल्टाटा कौन ही थाए लो प्रेशर ही थाए चले फिर नेक्स्ट गुड्डू पचारुची कहीं बिकज डेल्टा आर द फ्लैट एरिया being the flat area गछ तो एते नहीं कोड आसीबो एते सब चाष जमी गुडा there would be remain low pressure that will create low pressure so delta always ध्यान से मन रखो सेथि पई तो इधर सुंदरबन डेल्टा को जेतबे तमे ट्रॉपिकल साइक्लोन आसुची त माने सुनिथिबो इधर से केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट को स्ट्राइक करिवो नहले सुंदरबन नहले इधर से भितरकनिका नहले सुंदरबन काहे कि साइक्लोन ऑलवेज मूव डेल्टा टू डेल्टा बुझी पारिबो बिकॉज ऑफ लो प्रेशर कहना साइक्लोन जुआडे लो प्रेशर सियाडे से मूव करिवो चले नेक्स्ट 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 फटाफट फटाफट एते इजी क्वेश्चन दिया को कौन खोज अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वन रखो ए इज द करेक्ट आंसर शत्रुजीत लिंकू शुभकांत सोनिता सुजाता शिखा आयशा सस्मिता गुड्डू अनुप्रिया समस्ते राइट आंसर देछि
yes तो फास्ट तो ये आसीबो this would be then this will be second this would be third this would be fourth हे जीवो ओडिसा रो केते प्रकार रिवर टाइप अछि ये तो रिवर्स अच्छा ओडिसा कोस्टल को कोन कहजे हेक्सा डेल्टाइक कोस्ट कहजे ये तो समझते जानि छे ओडिसा कोस्ट को कोन कहजे हेक्सा डेल्टाइक कोस्ट कहजे ना जानना कथा तो जानथबो समझते नॉर्मल कथा नै कि कोन कहजे हेक्सा डेल्टाइक कोस्ट कहजे बिकॉज ऑफ 6 रिवर आकु किए बनाउछि 6 रिवर है ना एटा तो जानि छे समझते बट अच्छा एटा जदि जानि छे समझते ओडिसा रिवर को केते भाग रे भाग कराई छी को that is the rivers of Odisha is divided into how many types the river of Odisha is divided into how many types how many types केते भाग रे ओडिसा रे जेते रिवर अछि सेमान को हम केते भाग रे भाग करिचे टू टाइप्स फोर टाइप्स ना there would be what four types there would be four types केते four types केते 2 3 ए सब नो फोर टाइप्स गोटे हला रिवर origin within Odisha and flows through Odisha and flows through Odisha एटा हला गोटे टाइप देन रिवर origin within Odisha but flows through other state पहले आंध्र प्रदेश जेमती तमर वंशधारा नागबली राइट ये सब सेमिति एठी रिवर ओरिजिन विदिन ओडिशा फ्लोइंग थ्रू ओडिशा जेमती तमर की हेजिवो लेट्स आमे कहबा बैतरणी बुढ़ाबाळंग साळंदी ऋषिकुल्या ये सब गला ये गोटे गला देन रिवर ओरिजिन आउटसाइड ओडिशा बट फ्लोइंग थ्रू ओडिशा बट flowing through Odisha जेमती महानदी ब्राह्मणी then last type river origin within Odisha but flows through but become the tributary of other river जेमती हला तुम्हारी इंद्रावती बस हला के जबो इंद्रावती चलो फिर मैच करो मैच इट match it सेटे साबरी सिलेरु सेटा आसीबो जोटा सिलेरु कोट सेटा हां सेटा आसीबो साबरी सिलेरु आसीबो साबरी एंड सिलेरु जोटा हमें मासकुंड कहूचे कोटा एटा 14 रो एटा आंसर कहि छी बा आरो एटा आंसर बा कहि छी यार बी 14 को आसा ओ ऑप्शन अच्छा ऑप्शन इज हियर अच्छा अच्छा ऑप्शन
राइट ताले एटा देखो आंसर हे गेला ए दउछ तो मेजॉरिटी आंसर ए देखि मैच करबा केउझर कोन पे जाय आयरन पे दैट मींस हाँ आयरन तो अछि केउझर ताले एठी जदि मैच करबा ताले फटाफट मैच कर दबा एक मिनिट फटाफट में मैच करबा केउझर आयरन 1 3 ठीक अछि BC2D4 करेक्ट चलो सो डी इज राइट आंसर नेक्स्ट चलो 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 फटाफट फटाफट नेक्स्ट which of the following pair is correctly matched 15 अरे गहिरी माथा तो जान ऑलिव रिडले आउटे पूर्व डिस्कस कले बा आउटे पूर्व डिस्कस करने थे केन्द्रापड़ा अच्छी टिकरपड़ा कौटी टिकरपड़ा रही महानदी टिकरपड़ा इज फेमस फॉर व्हाट क्रोकोडाइल चंदका कौन एलिफेंट पाई एटा कौन बफालो कोड आसबो दिस इज एलिफेंट एटा कौन रहबो तुमरो this one is elephants this one was is what elephant so 3 got cancelled 1 and 2 is the correct answer what next Odisha accounts nearly 70% of India's productions of which minerals easy one easy questions एठू ही पिक करो एठू 1 and 2 वगैरह किछि नहीं संजय दड़ई कोच 16A Odisha accounts nearly 70% of productions of which minerals सिक्सटीन तो मैंगनीज तुम से कह 70% ऑफ कौन तो मैंगनीज क्रोमाइट हम बी ही तो हम आंसर आंसर बी हम सी कहीं जाऊच मतलब बॉक्साइट कहीं जाऊच क्रोमाइट हम ना क्रोमाइट जदि इंडिया रो जदि 96% ओडिशा पाखरे अछि तो बी ही आंसर हम कौन बी हम चलो नेक्स्ट 17 बी हम नेक्स्ट which types in Odisha is associated with shifting cultivation पड़ू चाष जाकू स्लैश एंड बॉन्ड कल्टीवेशन को आजे चलो 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 फटाफट करो एटा देखि देलो ना ये इजी क्वेश्चन थिला नाउ द एक्सप्लेन 17 17 D coach is Subhakant A coach is Sunitha Susri is going for A Samir is going for D Sanu is all both बढ़िया is all is the answer Sikha is going for A no A is not all would be answer Sora Joang Kont all is the answer what it's a pudu chasa the slash and bond cultivations that is coming under all is the answer
right? Rasmi is going for C. Rasmi is a D. D is the answer, right? Come from the 18 number questions. 18 number question. Which of the following statement is correct about the Chilika Lake as the largest coastal lagoon lake in India? It was included into the Montreux records due to the ecological degradations. It's a desilted. It is a what that is designated as the Ramsar site. When? In 1981. When? It was included in 1981, and the Montreux record, it was probably 1992. Chalo. Gudu is saying all. Yes, correct. All is the answer. Yes, all is the answer. All is the answer. Yes, all is the answer. It's the largest. This is not longest but largest. 60 किलोमीटर होची यार कौन लेंथ, 20 किलोमीटर होची विथ, राइट? तो एरिया वाइज जदि देखबा एशियाज लार्जेस्ट लागून लेक एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड थिला बट 2002 रे दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स. It is 1981, so correct answer. Now comes to the Odisha geologies, that is what geography. Other questions we will comes. Now the highest peak in Odisha is समझते जानते. This one is easy peak to all. This is Malyagiri. No, this is Devmali. Yes. गंधमार्दन हिल समझते जानते. या ऊपर ओपीएससी क्वेश्चन पचारछि, आकु क्वेश्चन पचारछि. नाउ महेंद्रगिरी क्वेश्चन, देवमली, ये सब क्वेश्चन ओपीएससी ऑलरेडी पचारछि. एंड देखो ओपीएससी गंधमार्दन हिल पचारछि, ओपीएससी महेंद्रगिरी पचारछि, ओपीएससी देवमली पचारछि, माल्यगिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी माल्यगिरी. मते को माल्यगिरी को डिस्ट्रिक्ट रो अछि? एनीवन? माल्यगिरी को डिस्ट्रिक्ट रो अछि? इंपोर्टेंट पिक्स तुमको पचार पारे. द इंपोर्टेंट पिक्स ऑफ ओडिशा. माल्यगिरी. बी इज द करेक्ट वन, बट मते को माल्यगिरी कोठी अछि? अनुगुल. यस, पल्हाड़ा रेंज. कोठी? अनुगुल पल्हाड़ा रेंज, क्लोज टू केउझर बॉर्डर. क्लोज टू केउझर बॉर्डर. बहुत बढ़िया. यस, राइट आंसर इज बी. बट मु जो पचारे माल्यगिरी, गंधमार्दन हिल तुम समस्ते जान वेस्टर्न ओडिशा देखा जाए. महेंद्रगिरी आम कह गजपति रीजन रे तुमने जान. इट्स वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आम कह. गंधमार्दन बायो हेरिटेज एटा बहुत इंपोर्टेंस रही. देवमाली हाईएस्ट पिक कोरापुट रही. माल्यगिरी तुम अनुगुल एंड केउझर बॉर्डर रे रही. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो पल्हाड़ा रेंज रो हाईएस्ट पिक. ये रही तुम. नेक्स्ट क्वेश्चन आस. Which river forms the boundary between Odisha and Andhra Pradesh before entering into the Bay of Bengal? नागावली, इंद्रावती, सुवर्णरेखा, वंशधारा. ट्राई करो हेजबो. डू इट फास्ट. बी इज वंशधारा. बी इज saying yes. Sanu is going for the B. देखो सुवर्णरेखा इज नॉट हियर. सुवर्णरेखा होची ओडिशा एंड मतलब बेंगल. सुवर्णरेखा होची ओडिशा और बेंगल भीतर है. दिस इज सेइंग ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. B is the correct answer. B is the correct answer. जोटा संगीता कोचन B. Subhakan, Susri. B is the correct answer, right? Nagavalis. That is good evening, Sangeeta. B is the correct answer. Now, 3 number questions. Chilika Lake was designated the first Indian wetland international importance under the Ramsar Convention in which year? Already year mu out tikke purboru hi kahichi. Ara answer mu tikke purboru just ebe kohutili. Kuo. मु आर इंपोर्टेंट इयर्स सब कहि दिछि. चिलिकार इंपोर्टेंट इयर्स जदि तुम माने मन रखिया पई चाहूच, द चिलिका जदि समस्ते कहि देबो, दैट मींस इट वाज 1992. इट वाज 1992. इट वाज एडेड टू आमे कहबा मॉन्ट्रेक्स.
जो तुमरो मॉन्ट्रिक्स रे ऐड हैला then it was 2002 it was removed and 1992 रे आउ गोटे जिनस जदि हमें केबा चिलिका रहितला तमरो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए दैट इज व्हाट चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए मध्ये शायद 1992 रहितला एंड ता पूर्वरो 1981 रहितला चिलिका जे रामसर साइट तो इंपोर्टेंट डेट लाइन होची 1981 1992 1992 2004 बस हे गेला तो हे गेला आंसर तमरो 1981 so that is the correct one. Then the drainage and climate. Hirakud Dam, one of the largest and the longest earthen dams, is built across Mahanadi. Samaste janicho. Right. Motte kuhotale dam rehabilitation of programs ko barso asithila. The dam rehabilitation programs. And Hirakud Dam which is a gravity dam. It's a what? Gravity dam. It's a gravity dam. One of the longest dam. आउ एटा होची हमरो डैम जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तमरो थिला 2016 रे थिला तमरो डैम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तो सेटा गुटिके देखि दो एटा इजी क्वेश्चन होची दे इजी क्वेश्चन थोड़ी पचर तुमको अच्छा रेंगाली डैम को रिवर ऊपर अछि एटे छाड़ दियो रेंगाली को ऊपर तुमको टोटल सब डैम पढे पड़ो रेंगाली तमरो कहा ऊपर ब्राह्मणी ऊपर अछि इंद्रावती ऊपर इंद्रावती डैम रहिछि सेटा पढो आउ बाकी तमरा जो हीराकुद डैम होचे रामसर साइट आर्टिफिशियल रामसर साइट now comes to this one which of the climatic phenomena primarily influence the rainfall pattern of Odisha during the October to November in October and November yes काला बैसाखी तुम साधारणतः मार्च अप्रैल मे रे आसे काला बैसाखी रिट्रीटिंग मॉनसून ओडिसा रे हुए नाही वेस्टर्ली ओडिसा रे बहुत कहाँ भा को रेयर केबे केबे आसे तो आंसर वुड बी डी तो आंसर कौन है डी आंसर कौन है डी तो ऑब्वियसली आंसर की रही आउ किछि नाही ऑप्शन रे क्वाडे छिबी आई विल डेफिनेटली गो फॉर द डी बिकॉज अक्टोबर मास रे नवेम्बर मास रे अधिक साइक्लोन हेते सुपर साइक्लोन कथा भाबो केबे हिथला सुपर साइक्लोन अगेन नवेम्बर मासरे सुपर साइक्लोन जदि आम देखा कि अक्टोबर 26 रही बोधे नवेम्बर तो नुह अक्टोबर 26 रे ना केबे हितला मोर अक्टोबर मासरे हितला इट वाज अक्टोबर और नवेम्बर मोर मन पड़ुन सुपर साइक्लोन 1999 26 नवेम्बर ना अक्टोबर हितला हैं मन पड़ुनी मो दो मतलब भुक्तभोगी कहते नहीं आई हैव सीन दैट आई वाज just around 8 years or 10 years like that. I was around 9 years, right? Yes, 9 years that time. Yes, 29 of October. Yes, correct. Now, which of the following soils occupies the largest area in Odisha? एडा भी कहि देछि आंसर आउटे पूर्व जो सॉइल डिस्कस करथले मु कहिछि सेथरे जेतरे मु सॉइल ऑफ ओडिशा डिस्कस करथली मु सेथरे कहितली लार्जेस्ट सॉइल ऑफ ओडिशा ऑलरेडी कहि देछि हां ओके राइट red soil answer would be red soil answer would be red soil simplify biosphere is primarily famous for what are the last questions last two questions na three question kete rauchi how much okay फटाफट करो फटाफट simplify biosphere reserve is famous for what b tropical moist deciduous forest tropical moist deciduous forest known as the black gold तो जानी छे तमे नेक्स्ट फटाफट जीवा फटाफट कमन फास्ट 8 नंबर ब्लैक गोल्ड समझते जानी छो
Which of the following resource is known as the black gold of Odisha? That is coal. The port of Paradip primarily developed for export of what? Primarily developed for the export of what? Obviously iron ore. That would be answer would be what? Iron ore. Iron ore. 9 number will be 10 number. Last two questions. Which districts of Odisha is the largest producer of bauxite? Liku Naik is saying go for C. Is Koraput is the right answer. Yes, Koraput. Koraput is right answer. It's a what Koraput. देखो ये ओडिशा ज्योग्राफी 5टा क्वेश्चन आसीबो केतेटा आसीबो तमरो प्रिलिम्स रे 5टा क्वेश्चन आसीबो 4टा रु 5टा क्वेश्चन ओडिशा ज्योग्राफी आसीबो तो काफी आज हमें सॉल्व कर देइ छे ना को मैच करो द गोल्डन ट्रायंगल्स ऑफ ओडिशा इज इंपोर्टेंट फॉर व्हाट गोल्डन गोटे होचे डायमंड और गोटे होचे गोल्डन दीटा जानछो तमे संगीता मते पचारुछि कि मु केबे स्टडी इक्यू ऐप रे क्लास ने मु मॉर्निंग रे नि I do take in mornings that is Paripurna batch in the what Paripurna batch in the batch of what Paripurna. Next it's a what Bhubaneswar, Puri and Konark. This is called as what the golden triangles and the diamond triangle is Lalitgiri, Ratnagiri and Udaygiri. That would be in Buddhism and this is for the IBC. The famous Sambalpuri sari is traditionally handlooms produced from which region of Odisha? The western region of Odisha. And this is all end of the today's sessions of the evenings, the what Odisha geography. And tomorrow onwards, I will have environment and science texts, which is also equally important for the prelims of Odisha. But from these sections and आप पूर्वरु जेतिक मैं ओडिशा MCQ करिछि से सब देखि दियो at least you will have 4 to 5 geography questions from the Odisha geography आसीबो so make sure कि आपण से questions को easily करि परिबे right. Thank you everyone and with this I will end the session. Thank you so much and good night to all. Take care.